Good morning, students. So, before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. In the last lecture, we have learned that what makes India a federal country. Okay, and before that, we had discussed the features of federalism also. So, according to that, in last lecture, we had done 3 points that how we can say that India is a federal country, although we know very well that in our constitution federalism is not written, union of states it is written, but the features that we had discussed in features of federalism, those we found in our country also. That is why with the help of those features we can say that India is a federal country. And in that first point we had discussed that more than one level of government. We know very well that in our country 3 levels are there na, but in the starting when we got independence, when our constitution had been written, at that time only 2 level of government were there na, but in 1992 the third level of government also added in our constitution. Now more than 2 levels are there, means 3 levels are there na. So with the help of this feature we can say that India is a federal country, because here more than one level of government na, more than one level of tier of governments are there. And the second features we discussed in the last lecture that the jurisdiction, the power of these 3 level are specified in constitution, and in that also we had done the 3 lists: state list, union list and concurrent list. Okay, we had discussed about these lists also, that the subjects those come in this union list, the central government, they have the right to make the law on these na. And the second state list means the subjects those come in that list, the state government has the right to make the laws on that subjects. And the in concurrent list we had discussed that in concurrent list those subjects are include on those, the state and the central, they both can make the laws, but if any dispute arise between them, then central government is the final means final authority to make the law. And the next thing, rejudiciary subjects also we have discussed, that the subjects means some subjects those come after the return of these constitution, return of these 3 lists, which all subjects we can include that rejudiciary list or subjects. And in that list means all subjects those come in that list, in that subject, the central government has the power to make the laws on that subjects na. Now, so after that let's discuss the third point, that how we can say that our country India is a federal country. Okay, so next point beta, see, India holding together federation. When we discuss the type of federation, we have discussed that 2 types of federation are there na, coming together and holding together. So we know very well that in our country which type of federation type is there, होल्डिंग टुगेदर, बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपनी पावर को शिफ्ट किया हुआ स्टेट की तरफ, स्टेट ने लोकल गवर्नमेंट की तरफ. ओके, सो सी, इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आर देयर. एंड नेक्स्ट थिंग, अनइक्वल पावर्स अमंग स्टेट्स इन होल्डिंग टुगेदर फॉर्मेशन फेडरेशन. वी हैव लर्नड दैट जो स्टेट्स होते हैं उनकी पावर इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है. कुछ स्टेट्स को स्पेशल राइट्स भी दिए जाते हैं. एंड दैट फीचर इफ वी talk about in the example of our country, then we find that in our country also all states means some states have the special rights. जैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर था पहले उसको स्पेशल राइट्स मिले हुए थे, ऑल्दो अभी तो ये रिमूव हो चुका है. ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग कि जो मणिपुर है, मिजोरम है, उनको भी कुछ स्पेशल राइट है. और आने वाले टाइम में इफ़ द गवर्नमेंट फील दैट द स्पेशल राइट्स हैज़ टू बी गिवन दिस स्पेशल स्टेट्स, देन द गवर्नमेंट कैन बी given. So in this, if we talk about according to this feature, that holding together federation, this is the type of federation now. And in our country also this type of feature we can see. So that is why we can say that our country is a federal country, because in our country the second type of federation type means the holding together we can see. And in our country
the different states have the unequal power also, means not all but some states has given the special rights also, okay, special power also. Now next, union territories. So we know very well that now union territories are there, 9 union territories and 28 states. If we talk about union territories, so what are union territories, beta? But union territories are those geographical areas or territories, you can say that those are very small to form any states, कि जिनको हम इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम स्टेट नहीं बना सकते, एंड इवन वी कैन नॉट मर्ज देम विद अनदर स्टेट, कि हम अनदर स्टेट्स के साथ भी उनको मर्ज नहीं कर सकते. नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई? बिकॉज कि जो उनकी कुछ जोग्राफिकल टेरिटरीज ऐसी होती है, जोग्राफिकल टेरिटरीज बैरियर होते हैं कि हम उनको मर्ज नहीं कर सकते. अब जोग्राफिकल टेरिटरीज बैरियर कैसे? लाइक जो हमारा अंडमान निकोबार है, जो टेरिटरीज हैं, ठीक है, दिखने में बहुत स्मॉल है वो. अब वो उनको हम खींच के तो नहीं ला सकते हैं, वी नो वेरी वेल दैट दे आर आइलैंड ना. अब उनको हम अपनी टेरिटरी के साथ मिक्स नहीं कर सकते ना, अगर हमें दूसरी स्टेट्स के साथ उनको मिलाना है. सो दिस टाइप ऑफ बैरियर, जियोग्राफिकल बैरियर इज़ देयर, एंड सम टाइम देयर कल्चर की जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के कल्चर वो डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे हम पुडुचेरी का एग्जांपल है कि पुडुचेरी को हम आंध्र प्रदेश के साथ मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के जो कल्चर है लोगों का, जो वहाँ के लोग हैं वो अलग हैं. ठीक है, अगर हम उनको मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि मे बी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम अराइज हो जाए, वो अपने आप को उनके साथ एडजस्ट ना कर पाए. सो दैट इज़ वाई दीज यूनियन टेरिटरीज आर फॉर्म्ड इन आर कंट्री. एंड सी, यूनियन टेरिटरीज, दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट. ओके, कि इनको स्टेट फॉर्म करने की पावर नहीं होती. यहाँ पे कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज. कि स्पेशल पावर किसको होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है. ओके, दिस इज द फीचर्स ऑफ आर मीन्स कंट्री. नेक्स्ट, see, power sharing arrangement. Power sharing in federalism also we have learned when we discuss the features, that power sharing is the most important feature of federalism na. In the case of Belgium also we have learned this. And this power sharing, it is, we can see in our country also, because the power shared by central government to state government and state government to local government na. So power sharing arrangements इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है पावर शेयरिंग की. पावर शेयर की जाएगी, जो पावर है वो सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में जाएगी. हमारी लिस्ट भी बनी हुई है, 3 लिस्ट, दोज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर. एंड द नेक्स्ट, दिस अरेंजमेंट्स कैन नॉट बी चेंज ईजिली. कि जो अरेंजमेंट्स है वो ईजिली चेंज नहीं हो सकती. इन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वी हैव लर्नड कि जो प्रोविजंस है दोज आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली. मीन्स कोई वन पर्सन या वन गवर्नमेंट या वन कॉन्स्टिट्यूंसी यूनिट उसको चेंज नहीं कर सकती. और सेम थिंग हमारी कंट्री में भी है. जो फीचर जो हमने फेडरलिज्म में लर्न किया था वो फीचर हम अपनी कंट्री में भी देख सकते हैं. कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं जो प्रोविजंस हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते. मीन्स अकेली जो बीजेपी है वो चेंज नहीं कर सकती, या पार्लियामेंट का एक हाउस नहीं चेंज कर सकता. बिकॉज दिस अरेंजमेंट्स कैन नॉट बी चेंज ईजिली. हाउ any change to it has to be passed by both the houses of the parliament. Means ki if the government want to change any in the constitution, in the written constitution, then what they have to do, it has to be passed by both houses. Means both houses, the lower house and the upper house, means the Lok Sabha and the Rajya Sabha, दोनों houses, and with, see the condition, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी. कि दोनों हाउसेस की एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी जब उसको पास करेगी तभी वो पास होगा, तभी चेंज आएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज नहीं आएगा. बट उसके साथ में इन दी लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई डिस्कस्ड दैट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने बिहाफ पे चेंज नहीं कर सकती कोई भी प्रोविज़न. ये फीचर में भी हमने रीड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके जब दोनों गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होगा तभी उसमें चेंज होगा. सो सी, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स. सपोज नाउ इन आर कंट्री 28 स्टेट्स आर देयर ना, सो हाफ कितना हो गया? 14. सो एटलीस्ट 14 स्टेट उसको
पास करे तब वो चेंज होगा. सो इट इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क ना, कि कोई भी अकेले गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, यूनिलेटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकती. एंड दैट इज़ द फीचर ऑफ फेडरलिज्म. इन फेडरलिज्म वी हैव डन, एंड दिस वी कैन सी इन आवर कंट्री ऑल्सो. सो दैट इज़ वाई we can say that our country is a federal country. Okay, and now the next thing, judiciary takes decision in case of dispute. This is the feature we can see in our country, and this feature we have learned in the features of federalism also, that ki if any disputes arise between central and state government, then the courts, the judiciary, that work as an umpire na. So in first chapter also we have discussed this, that the judiciary that play the important role in the organs of government. We have learned that जो checks and balances है इस judiciary के through वो हम कर सकते हैं ना, कि वो अपनी power का misuse ना करे. So this is also the features of the federalism. So beta, all these point means on the basis of these all points we can say that our country is a federal country, although it is not written, but the features we are following in our country. So on the basis of these features we can say that our country is a federal country, because in our country more than one level of governments are there. And second thing, the jurisdiction, the powers of all the levels are written, are specified in the constitution. And the next thing, that there are the holding together federation is there. And the next thing, we have learnt that the provision, the change in the constitution, it cannot be easily changed, means unilaterally. No one level of government cannot be changed that. And the next thing that we have learned, that if any disputes arise, then judiciary play an important role. Okay, so this is all about today. Tomorrow we will discuss the next topic. So if you want to take the screenshot better, then take please.